and welcome. Who among us does not enjoy a bout of unseasonal rainfall or get excited when a hailstorm hits us? Well, every time there's an occurrence of that sort, many, however, pay a price. This special episode, we bring to you the extent, the magnitude of devastation on account of unseasonal rainfall and hailstorm in several parts of the country. We also bring to you the humanitarian crisis that it has triggered, turning these lush farms into killing fields. Travelling first to Barabanki in Uttar Pradesh, where from our correspondent Amir Haq reports that the Rabi crop, typically a time for a farmer to earn maximum returns on his investment, has failed by as much as 75%. Tej Shankar Mishra, a small farmer at Bhitauli village in Barabanki district of Uttar Pradesh, doesn't know how to react to the disastrous situation that he's stuck in. At the beginning of the Kharif season, he had taken a loan of 60,000 rupees from his cooperative to cultivate his 8 bighas of land in his native village. जितना एक बाली में हम लोग पैदा करते थे, उसका आधा नहीं है इसमें, और ये कोई भी दाना हमारा ये मजबूत नहीं है. The money was disbursed in parts during the sowing season, first to procure hybrid seeds of wheat and then to buy fertilizer, manure and pay for labor. Mishra hoped to make a decent profit from his investment and repay his loan by the end of the harvest season. But after unseasonal rains in March, what the poor farmer now has is not even worth half his investment. That he will be burdened with additional interest and may be exposed to action on part of the cooperative is a secondary concern. His primary one is, how will he fend for his family? 75% गेहूं का नुकसान हुआ है, जो हम लोगों ने सोसाइटी से कर्जा लेकर के खाद और ये सब व्यवस्था बना के डाले थे. आज उसमें जो है, जिसमें 10 बोरी गेहूं निकलता था, 2 बोरी गेहूं की उम्मीद नहीं है. कैसे हमारे जानवर जिएंगे और कैसे हमारे बच्चे जिएंगे. Wheat, mustard and potato are the most common crops in the Rabi season for most farmers in Barabanki district. This year, because of heavy unseasonal rains, farmers in this area have suffered huge damages in all 3 crops. While wheat and mustard have literally been blown to the ground because of strong winds, the grains of wheat have not grown to their natural size because the fields are inundated underwater and has been affected by the resultant moisture. Tej Shankar's brother Kaushal Kishore narrates his share of woes. बारिश ने जो है भूसे को भी जो है डैमेज कर दिया, और जो बालों में दाना शेष थे वो भी सब काले और जो है छूछे हो गए, जिनमें कुछ नहीं है. इस समय की स्थिति ये है कि जो हमारी सरसों की फसल थी वो 100% जो है, चूँकि फली आ चुकी थी, वो फट गई और खेतों में गिर गई. गेहूं का हालत ये है कि भूसा भी जो है ज़मीन में लेटे होने की वजह से वो सब जो है हल्का पड़ गया, और थ्रेसरिंग में वो जो है हवा के साथ उड़ जाएगा. हमारे पास जानवरों को खिलाने लायक भी भूसा नहीं बच रहा है कि भूसा बच रहा हो. गेहूं की कंडीशन जो हमने दिखाई है, जो ये हमारे हाथ में है इस समय, इसमें आप देख लीजिए कुछ भी शेष नहीं बचा, जो है सब मुँह के फूंकने से उड़ रहा है. ऐसी स्थिति में आलू हाई टेम्परेचर में जब पानी गिरा तो आलू टोटल जो है वो दग रहा है, खेत में फट रहा है जो है. The unseasonal rainfall and accompanying hailstorm has so impacted the produce that farmers fear their yield
will be down by 3/4 of what they used to get in a regular season. The average yield in Barabanki district is around 6 to 8 quintals of wheat per bigha of land under cultivation. This time it is down to 1.5 to 2 quintals per bigha. The quality of wheat and mustard is also low, and they are not expected to fetch a reasonable price at the market. The farmers also do not hope to make good the losses in the Kharif season, since practically most of their earnings come from this Rabi crop. हमने कर्जा लेकर के सोसाइटी से और प्राइवेट में जो खेती बोई थी, अब वो कर्जा भी देने की स्थिति में है। छोटा किसान है नहीं, जिनके पास कोई साइड आमदनी नहीं, केवल 100% 365 दिन जो है खेती पे आश्रित हैं। उनको जानवरों को खिला करके उनको बचाना दुर्लभ हो रहा है। अप्रैल से नया सेशन शुरू होने वाला है, बच्चों का एडमिशन कराना है, उनको जो है कापी किताब बुक्स ड्रेस दुनिया के इंतज़ाम उनको देने हैं। और हमारा जो कृषि लोन है उसको हम इसी समय अदा नहीं अगर करते हैं तो हमारे खेतों पे हम पे वैधानिक कार्रवाई होगी, आरसी कटेगी या खेतों में लाल झंडियाँ लगेंगी। As per a Met Department report, the average rainfall in at least 47 districts of UP between March 29th and 30th has remained around 25 millimeters, which exceeds the overall average rainfall in the month of March in this area. Now, this unseasonal rainfall has completely destroyed of what was left of the Rabi crop that somehow managed to sustain the rainfall in the month of February and March beginning. It is triple trouble for most farmers of the region. Low produce this season has not just deprived the farmers of a reasonable profit, it has also taken away their capacity to pay back earlier loans, and it has burdened them with additional loans for the coming season. The farmers usually saved enough food grains for their domestic use after selling their produce in the market. But this year, that has not been the case. The other problem that they foresee is how to pay thresher owners who this season are not accepting barter for their services. हर किसान के पास थ्रेसर नहीं है। थ्रेसर वाले जो है कैश पे ही जो है खेत में आने के लिए तैयार है। ये सड़ी हुई लाख को जो है अगर हम थ्रेसरिंग करा रहे हैं तो उसके लिए हमको जो है 600 रुपये घंटे 700 रुपये घंटे जो है उसका किराया देना है। पता ये चल रहा है कि 1 घंटे चलने के बाद हमारे पास भूसा और गेहूँ मिला करके 200 रुपये का नहीं बच रहा है। There is, however, no option before the average farmer. The crop, despite its poor quality, is ready for harvest, and even though no government official has turned up to make an assessment of the losses, they can't allow the crops to stand in the fields. The farmers understand that in the current scenario, it will be impossible for revenue officials to make a fair assessment of the overall crop damage. अब जिस खेत में हम बैठे हुए देख रहे हैं आप, इसमें 10% भी फसल खड़ी नहीं है। 3 बार ये पानी से जो है डूब चुकी है और ये सड़ चुकी है, और इसका अनुमान लगा करके जो है कंपनसेशन संभव ही नहीं कि दिया जाए और किसान का उससे कोई लाभ हो। 1,500 किसानों के पास लगभग 2,500 खसरा नंबर है। उन 2,500 खसरा नंबर में खेत खेत जा कर के पड़ताल करने का समय ही नहीं है। पड़ताल गवर्नमेंट जो है कि कर्मचारी लेखपाल वगैरह जो कर रहे हैं वो हार के हिसाब से कर रहे हैं कि इस हार में कितना डैमेज हुआ है। हमारी सरकार तो ठीक हम लोगों को सहयोग देने का ऐलान करती है, लेकिन हमारे अधिकारी इतने जो है निकम्मे हो गए हैं कि उनका पैसे से पेट ही नहीं भरता है और यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं किसी को कि क्या समस्या है पब्लिक की। कोई आग लग जाए, पानी गिर जाए, बह जाए, उनको यहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं। It is not as if the government has not paid heed to the needs of the farmers. While central government mulls over a compensation package for the state, the UP government has announced a compensation of 200 crore rupees for farmers affected by untimely rain. Officials have been asked to be sympathetic towards aggrieved farmers and to speed up assessment of damaged crops and to disburse adequate compensation and postpone recovery. But despite strict government directives, the red tapeism in implementation is never ending, and the compensation package may just not be enough considering the scale of losses. केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो है
अगर केंद्र सरकार से धन आहरित होता है, प्रदेश सरकार से होता है, तो अधिकारी उसको अपने मानक से, अपने अनुरूप से उसकी चेकें बनेंगी, महीनों में चेकें बटेंगी, चेकें बटने के बाद वो बैंक में लगाई जाएंगी। तब कहीं जो है 3 महीने और 4 महीने बाद कोई अगर जो है 200-500 रुपए की जो है आर्थिक मदद मिलती है तो मिलती है। इससे ज़्यादा अभी तक किसी भी आपदा में किसान को राहत नहीं दी गई। Unseasonal rains have actually wreaked havoc in the lives of these farmers. With over half of the 80 districts in the state being affected, it is a Herculean task for the UP government to properly assess damage and to adequately compensate farmers. What makes matters worse is that insurance schemes like National Crop Insurance Program do not cover crop losses due to unseasonal rains. Now the only hope for these farmers is for a special package from the government, which if delivered in time can possibly save the year for them. Otherwise, as many of them suggested, they will have no option but to take the extreme step. I took off for Bhiwani in Haryana, where the damage is not restricted merely to wheat, mustard and vegetables. It has crushed fields, farmers and families. Bhiwani district of Haryana, a region known for its farm produce, today resembles a graveyard of crops which were about to be harvested. The tragedy compounded by the perceived inaction. For brothers Maharam and Dharampal, counting the losses is all that is left to be done. हमारा श्रीमान जी इस फसल को बुआई से लेकर तैयार करने तक कम से कम भी 2332 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आ जाता है। 25,000 है, लेकिन वो सरकार की मिनिस्टर है, ऐसी है ना, हमारा तो 25 से गुजारा नहीं होगा साहब। इस फसल के ऊपर 25-30 हजार रुपए तो एकड़ पर खर्चा आ जाता है। Half a kilometer from the mustard farm is Rajkumar's wheat and vegetable farm. For him, the devastation of his farm means a direct obstacle in educating his children, providing medicines to his ailing parents and, like everyone, making ends meet. मैं एक ऑर्गेनिक फार्मर हूं और बहुत ही सुलझा हुआ पढ़ा लिखा, मेरे पिताजी भी पढ़े लिखे किसान हैं, मैं भी पढ़ा लिखा किसान हूं। बहुत सिस्टम से हमने खेती की हुई थी। परिवार के पालन पोषण के लिए और कोई आय का साधन भी नहीं था। ओलावृष्टि से छत टूट चुकी है, लगभग इतने बड़े ओले पड़े कि छत टूटी। हाँ, छत टूट गई, आपने देखा है, और उसके अंदर से इतने छेद हो गए कि अब लगभग 1 लाख से ऊंचा नुकसान हो गया है। ये देखो। Rajkumar's 71-year-old father says the intensity of the hailstorm that hit Bhiwani is not something he has ever seen before. हाँ, ये जी टूट गया, ये मतलब 2-3 दिन में धोड़ा होकर ये सड़ जाएगा, और मतलब चारा भी कहीं बाहर से लाकर सड़ाना पड़ेगा। सब तोड़ मरोड़ कर खत्म कर। Crop damage of the kind witnessed in Bhiwani has left this homemaker too perplexed about the road ahead. हम कहाँ से तो बच्चे की फीस पड़ेंगे, कहाँ से हम पशुओं का चारा लाएंगे, कहाँ से हम डॉक्टर को फीस पड़ेंगे जी। बूढ़ा बूढ़ी 2 बीमार हैं, 50 हजार रुपये सालाना फीस दी बच्चे की। Unseasonal rain combined with intense hailstorm inflicted massive damages on important crops like wheat, mustard and vegetables. Needless to say then, this will have a direct bearing on their availability and pricing in the open market. So as the powers that be contemplate their next step, for those who inherit this mess, a lot, if not all, stands lost. The potato producers in West Bengal have had a bumper crop, but with no takers. This, along with the perception of an indifferent, insensitive administration, is enough for many to take their own lives. Manogya Loiwal reports. Walking on a tilled farmland,
35-year-old Patwati Le is clueless about her future. Realizing his inability to repay an 80,000 rupees bank loan, her husband Prasad, a small-time farmer, has committed suicide. ঝগড়া সৃষ্টি কোনোদিন হয়নি আমাদের সরকার যেটা বলছে সেটা ভুল বলেছে কেউ বলে এখানে কাউকে জিজ্ঞেস করে দেন প্রমাণ কেউ করতে পারবেন যদি মিল ছিল There are many potato farmers like Prasad Late in Bengal. In Bardwan, Swapan Kundu has committed suicide. Villagers and close friends allege that the low cost of potatoes forced him to take his own life. People angry about the government not even acknowledging them as farmers. Pained families now feeling the political pinch. আমার দাদা একটা চাষি ছিল, ঠিক আছে, উনি ভাগে বিঘে 5 করেছিল এবং ঠিকেতে বিঘে 2 চাষ করেছিল। সেই চাষ করার পরে উনি মোটামুটি 70-80 হাজার টাকা 70-80 হাজার টাকা ঋণে পড়ে গেছিলেন। কিন্তু ঋণে পড়ে যাওয়ার পর উনি আত্মহত্যা করেন। আর সরকার যেটা বলছে এটা পুরো ভুল তথ্য। সে চাষি ছিল, হ্যাঁ, চাষ করতো, বা সে আজকে দেনার দায়ে হয়েছে। হ্যাঁ, আজকে ভোট নেই বলে তারা কেউ আসেও না এখানে, কেউ একবার জিজ্ঞাসাও করতে আসেনি যে কি হলো না হলো, কোনো কিছুই আসেনি। Chief Minister Mamata Banerjee had ordered a procurement of 50,000 tons of potatoes directly from the farmers at the rate of 5,500 rupees per ton, which is far below the market price. Interestingly, even the farmers are reluctant but might sell it off because of the compulsion of the market. However, the TMC government has still not procured even a single kg. There are 452 cold storages for potatoes in the state with approximately 65 lakh metric ton storage capacity. But potato production in Bengal exceeds nearly 1 lakh tons. The surplus flooding markets, lowering prices. Weak potato demand from neighbouring states because of the 2013 ban on potato supply to other states, adding to woes. The only one who's responsible for this plight, the very bad plight of the potato farmers, is the state government. The fire now spreading to other districts in North Bengal, where farmers are preferring to throw their produce on the streets instead of selling it in the open market. Call it the height of insensitivity towards the farmers of their own state that the Trinamool Congress government is denying the fact that the person who died was a farmer himself. An ailing family is asking questions on is it because there are no elections to be held this year that the government is turning an indifferent eye towards them, and the tears rolling down their eyes, including the pain too. And finally to Maharashtra, a state unfortunately synonymous with farmer suicides. Correspondent Munish Pandey reports that in areas otherwise considered as prosperous ones, desperation is driving farmers to take the ultimate step. Nashik in western Maharashtra, a region known to cater to not just national but even international appetite. Facing a combined onslaught since the last 5 months has, however, resulted in these fields resembling graveyards. Unlike states in the northern part of the country, Maharashtra has been for a while now bleeding on account of uncertain weather, accumulating staggering losses. मुझको फार्मेसी को एडमिशन लेना था, उसको 40,000 रुपये खर्चा है, लेकिन घर के लोग लोन चुकाएंगे या हमारा पैसा पे करेंगे। मेरे पापा कर्जा लेकर उन्होंने मेरी पढ़ाई की थी और किसान खेती भी उन पे करते थे, लेकिन इस बारिश की वजह से वो ना कर्जा भर सकते हैं ना मेरी पढ़ाई कर सकते हैं। This bout has left young lives in the lurch, dreams aborted. हर फसल की और हर क्रॉप की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके हिसाब से उसका एक आधारभूत मूल्य होना चाहिए, तभी तो किसान को अच्छे दिन आएगी सर। अगले साल के लिए भी कुछ हमारे पास बचा नहीं है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो हम कैसे जी सकते हैं? Slowly but surely the anger is turning into desperation.
The much anticipated relief for the farmers has been finally announced, but the question being asked whether this package will meet the same fate. Farmers across the state have been complaining about the tardy compensation process. Even the last compensation hasn't reached the farmers as yet. Be rest assured that these damages suffered by farmers across the country will hit you and me as consumers tomorrow. And while a larger solution to this situation is still awaited, what is important to note is that many beyond us too have suffered. Thank you for watching. Goodbye.